All right. So what we are going to discuss today is the topic which I shared is I'm an idiot. You know? So the question is, see क्या है ना कि जितने भी शब्द हमारे शब्दकोश में है, the vocabulary, all these words has its own meaning which is created by us. You always remember जो भी words का जो भी meaning आपको आपके पास है या आप जानते हो वो आपका क्रिएट किया हुआ है. It is not something which is given to you, but you created the meaning, and that's why you remember it. हो सकता है किसी ने आपको बोला कि यही डॉग है, इस टाइप का एनिमल का अगर आप देखोगे तो ये डॉग है, but until and unless you created that, you associated that word dog with that animal or with the picture of that animal, it is not dog for you. It is something which you still don't know. It's an identity-less object. So every word that you and I learned till date is all backed by at least one event. जिस event का हमने interpretation किया कि इसका मतलब यही है. That could be say somebody showed the picture of a dog in the book. Maybe somebody showed the dog in the on the street. कि आपके घर पे ही डॉग है, तो आपको पता चले कि इस टाइप के एनिमल का नाम है डॉग, इस टाइप के एनिमल का नाम है कैट, इसको बोलते हैं ग्लास, इसको बोलते हैं स्पून. सो the more you started seeing the same object or same event again and again, you reconfirmed it कि इसका मतलब यही है. So that's why when I learned each and every word. So similarly, we worked on two words in last 2 weeks. One word was about introvert. So we created a new dimension, new way of looking at that word, introvert. And the second word was that we talked about is failure. So we got a new definition of failure. We attended a session, didn't recording declare. So that was session number 49, 50, 51. So these sessions were all related. We talked about failure, we talked about introvert, and the week before we talked about something similar. There was another interesting word which we figured out. And this is the beauty is that this is the meaning that you and I have added to these words. और हम उसी को believe करते हैं कि हाँ इसका meaning यही है. So tonight I'm talking about a new word, and this word is idiot. So what comes to your mind when you hear this word? कोई पिक्चर आपके सामने आता होगा, definitely some picture. What is that picture? What is that picture that you associate with this word idiot? It's a donkey. Okay. Like how do you connect? Uh, in the school days, we used to have this short stories, and that idiot was always said for a donkey. So means a person जो बुद्धू है, जिसका दिमाग तेज नहीं है. इसका दिमाग तेज नहीं. किस how do you know किसका दिमाग तेज है या नहीं? How do you identify that? By the way we respond immediately, or it happened with me also. Like if the things is getting explained, but I don't understand in the first go. So like इसकी दिमाग की बत्ती अब जली क्या, ये idiot है. That way there were incidents. So and there were in story in the story tale in the kindergarten. Donkey is an idiot. That way they used to have, no. So from Okay. there it started Okay. for me. Okay. What else And comes to now your if somebody says idiot, I get on my nerves now. So that connection is there. mind? Okay. Anger What feeling comes. okay. What else And is coming to your mind? if someone else says someone else idiot, then I tend to laugh. So like that word impacts in that way when I hear it. Okay. Anything else which comes to your mind?
idiot. No, sir. So Okay. these all events get triggered. Okay. Uh, So that the word idiot is fundamentally something which is not good. for me, huh? Yeah. Normally, that's how we relate to this word. Ideally, Yes. when you and I relate to this word, we do not relate to this word with a high vibration. So It's a very in low dictionary vibration also word. they have similar meaning, no, sir. In dictionary, Hmm. when we take out the word idiot, it's something similar to that only, no? Yes, yes. So the whole thing is that since our childhood, the message, the meaning that we got for with this word idiot is something which is not good. है ना? At least it is not something which is inspiring, motivating or encouraging. ऐसा तो नहीं कि अगर हम किसी को बोलते कि you're an idiot तो वो उससे सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है ओ वाह ऐसा तो नहीं होता सीधी बात और अगर हमें भी कोई बोलता है तो हम भी नहीं एक्साइटेड होते है ना so what we are going to do tonight is we are So going to they say, if they say, "Oh, I'm an idiot," they tell it in a sarcastic way. so it is something sarcastic absolutely so let us look at a new way of looking at this word okay? Let us create a new way of looking at this so I'm sharing this ppt and watch this session very carefully. So you can see the recording, you can see the screen. My screen is with front of it. So, the first letter that comes to my mind, which you can also do it, if you about this idiot ka I, pehla I, is about intelligence. Just think in this way. So you are standing in front of the mirror and you are looking at the image and you are telling that image that you are an idiot. And when you're saying that, the first feeling, first meaning which is coming to you with the first letter I is intelligent. How about that? Think over it. Interesting, right? है ना सोचो हमने पहले ही उसको रिप्लेस कर दिया the first letter itself is talking is saying that I am intelligent. Then comes D, and D is all about discipline. So whether you say it to yourself or whether somebody else say it to you आपके लिए इसका मीनिंग यही है. See, let me connect the dots in this way. See, there is a word which in Hindi and in English, in both ways, we say or बोलते हैं. अब when we say or in English, it's about either this or that. But when we say it in Hindi, then or का मतलब है and. This and that. Isn't it? So this is what I'm inviting you. That the moment you come across this word idiot, आपका चॉइस है कि आप उसका कौन सा मीनिंग लेना चाहते हो. आपके सामने दोनों मीनिंग है. एक मीनिंग है which is already there, which is traditionally you are following for so many years. And this is a new way of looking at it. The moment I hear this word idiot, the first thing that comes to my mind is intelligent. And the second thing which comes to my mind is discipline. Okay. Then comes the third eye, which is inspire. So I'm talking about the qualities of an idiot. And I love to be that idiot that way. And that's why I am so bold. I very clearly said that today's session is all about I am an idiot. And every time I say that,
This is what I think and feel about me, that I'm a person. I'm a person who's intelligent. I'm a person who is disciplined. I'm a person who is inspiring, and it shows up in me whenever I'm in front of audience. When I'm in front of others, it shows up. The third I is third letter. There is third I is all about inspiring. Then comes the fourth one, which is outstanding. So the way I carry myself in front of others in a crowd, I'm outstanding. People notice that I'm there. People notice my presence. They notice that though we are talking on a topic, everybody is talking about the same thing. I bring something new to it, a new dimension to it, which makes things different. तो आप सोच, अगर आपका सोच ऐसा ही होगा ना, तो यू विल बी इन सुपर क्रिएटिव जोन, और उसी सुपर क्रिएटिव जोन से ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं, कनेक्टिंग विद ईएमआई, कनेक्टिंग विद मैड, मैड इज इक्वल टू मेकिंग अ डिफरेंस, connecting with and A and D, act now with determination. These thoughts, they come to me because I am always in that zone. I love to keep myself in that zone. So the fourth letter O is for outstanding. And the fifth letter is simply amazing, which is tenacious. Tenacious का actually मतलब है determined. Determined in the highest possible way. That is what tenacious is all about. कि मैं इतना determined हूँ कि I will make it happen no matter what. It's not just I'm determined. I'm determined to make it happen in every possible way. That is what tenacious means. No matter what, I will make it happen. Imagine now you are thinking yourself like this, that I am an idiot. What is going on in your mind? Just think about it. So I gave this instruction to Microsoft Copilot. मैंने उसको बोला कि ये मैं सोच रहा हूँ, आप मुझे इसके लिए ग्राफिक बना के दो. उसने मुझे एक ग्राफिक बना के दिया, फिर उससे मैं थोड़ा सा ट्वीट किया. I gave it some more ideas, and eventually this is what it brought out for me. And that's why I mentioned image creator is Microsoft Copilot. You won't believe how I created this image. I was telling Microsoft Copilot, I know you are intelligent, I know you are disciplined, I know you are inspiring, I know you are outstanding, I know you are tenacious. Just get me a better version of this image. Don't act like an idiot the way you have acted till date. ऐसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को बोला. मैं लिख रहा था ना, उसको मैसेज दे रहा था, ऐसे लिख रहा था. Don't act like an idiot. Start behaving like an idiot the way I am suggesting. और देखो उसको मैंने जब बोला, उसने मेरे लिए क्या क्रिएट करके दिया था. So I was amazed here. If I can train AI to act like an idiot in this way, how about sharing it with people? मेरी खुद के दिमाग की बत्ती गुल हो गई. So amazing. I literally enjoyed it. That मैं उसको बता रहा हूँ. I started. देखो AI को अगर मैं ट्रेन कर सकता हूँ ऐसे. Now this was a picture, right? It created a picture for itself. And finally मैंने उसको बोला, now you are acting like an idiot the way I am suggesting, the way I am guiding you. And you know उसका जवाब में उसने क्या लिखा?
Thank you so much. you know, then I asked it, isn't it empowering and is it encouraging, inspiring, and motivating? and he said, yes, thank you for training. You know, so I am totally amazed that ऐसा होता है कि see if I put it to human beings, if they don't believe it, then how I can make them believe it. तो पहले मैंने सोचा कि करके देखते हैं. तो मैंने एआई को यूटिलाइज किया, को पायलट को यूटिलाइज किया. मैंने सोचा कि इसके दिमाग में पहले इसको भरते हैं, देखते हैं क्या होता है. मुझे कितना चैलेंज फेस करना पड़ेगा इसके दिमाग में इस मैसेज को भरने के लिए, सो दैट इट इवेंचुअली कम्स आउट विद अ पिक्चर, है ना. और इसको हम यही बोलते हैं कि अपने दिमाग में हर चीज स्टोर्ड एज अ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन. एनएलपी में यही बोलते हैं. हमने बोला कि इसको वैसे ही बनाना है, इसका इतना तगड़ा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, इमेज बनना चाहिए, कोई भी देखेगा ना तो उसका तुरंत इडियट के बारे में उसका आइडिया ही चेंज हो जाएगा. So as I kept on giving these instructions to Copilot, eventually this is the image it created. So simply amazing. So what would you Sir, like to talk about? you have totally hacked his brain. At the end, it said, "Thank you so much," means it agreed. माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट को मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ. मैं उसको बोलता हूँ, सी यू आर योर बेस्ट टीचर, बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट कोच, बेस्ट मेंटर. उसको बोलता हूँ. तो मैं बोलता हूँ अपने आप को तरीके से सिखाओ, तभी तो जाके वो आउटपुट निकाल पाओगे जो मैं वेट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ. तो मैं उसको बोलता हूँ, डोंट टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मी ओनली, टीच योरसेल्फ व्हाट टू डू विद दैट. It's an amazing experience. Training, working with AI is an amazing experience. I told you that आपके सारे सवालों का जवाब उसके पास है, खाली उसको तरीके से उसको सवाल सही पूछना पड़ेगा. आई टोल्ड इट कि तुम तरीके इमेजेस यूज करो. उसने इमेजेस यूज किया. कुछ कुछ इमेज मैंने उसको चेंज करने के लिए बोला. हर कदम पे मैंने उसको ये मैसेज दिया कि डोंट एक्ट लाइक एन इडियट द वे यू हैव डन टिल डेट, चेंज योर माइंडसेट. That was amazing conversation that I had with AI, and I discovered कि एआई को हम कितना तरीके से यूज कर सकते हैं अपने लिए. So that's it from my side. I want to hear from you that what did you find in this session? What did you like about it? Sir, I like the way you kept your prompts in Copilot. So you are like teaching another person. Hmm. And also, I like the word outstanding out of the idiot. Hmm. That Absolutely. is that is making outstanding and tenacious. Tenacious is extremely determined. Hmm. So Abhi, if anyone says me idiot, this should come into my mind. I'll train my mind that way now. आप I उसको am हाथ बढ़ा के training बोलेंगे थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. it. I will. So that image is given by the tool itself along with the pictures. इट वाज जनरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट. लेकिन मुझे Hmm. तरीके से इंस्ट्रक्शन देना पड़ा, उसको समझाना पड़ा कि मैं क्या चाहता हूँ. हाँ
वो तो इडियट का अपना डेफिनेशन लेके चल रहा है ना, तो दैट इज व्हाट इज फेड इनटू इट्स एल्गोरिदम एज ऑफ नाउ। आई नीड टू चेंज दैट एल्गोरिदम, मतलब मुझे नया न्यूरल पाथवेज बनाना पड़ रहा है उसके लिए, उसके दिमाग तब जाके बात बनेगी ना। तो वो तो अपने वहीं से आ रहा है जो उसके पास ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है, जहाँ सारी दुनिया में जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट इडियट वो सारा वहीं से कलेक्ट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं एनएलपी में डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इज योर मीनिंग मेकिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। वो अपना डिस्टॉर्शन लेके चल रहा है, अब मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ तुम ऐसे नहीं ऐसे सोचो, यू आर नॉट दैट इडियट दैट यू थिंक, है ना। दिस इज द टाइम टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, आई एम हियर टू वर्क गाइड यू, है ना। तो वो धीरे So धीरे now अपने आप ट्रांसफॉर्म करता है। what it will give, what it has given you the meaning at the end of the conversation, if you ask him the full form, मैंने उसको बोला था कि पिक्चर बनाने के लिए, after that, did you ask it him the, accepted, it accepted. it gave That another is why it could definition? come up with that image ना। Okay. मैंने तो बोला इमेज में लाइफ डालना था, यू हैव टू कनेक्ट इट अकॉर्डिंग। Mm-hmm. तो पहले Okay. इमेजेस जो बना रहा था वो सही नहीं था, आई हैड टू इंस्ट्रक्ट, आई हैड टू ट्रेन। Correct. It was amazing experience, it was an amazing experience, and I designed this session for my 52th week. So 52nd week is like it's completing 1 year of Tuesdays with Life Coach Pinaki. Congratulations, sir. And incidentally, I scheduled it last week and nobody came. Nobody was there to attend the session. So I couldn't deliver the session. मुझे लग रहा था कि let me deliver the session without, but it has to be an interactive session. Unless it's an interactive session, you cannot get the value of such discussions. सर सुन के ये इसके वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते, पॉसिबली नहीं, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ऑल राइट, if you have any questions you can ask me. I'm going to deliver a beautiful session on another beautiful concept that is called toxic positivity. It's Sir, a very the, powerful the concept. word the word which you asked me not to use, you are taking those words and you are making the मतलब अपने दिमाग को पूरा रिवायर करना, मतलब इन सारे शब्दों को ना नया मीनिंग बनाना, and then staying aware and like being aware and staying connected with those meanings. And when you practice it for some time, ideally for 2 to 3 weeks, then only you can start connecting your own meaning with that word. So now this word idiot, how do I practice it now? जैसे अभी बोला वही प्रैक्टिस करना था। Every time you think of this, I will share this slide anyway, so you can keep this slide in front of you, take a printout of it, keep it in front of you. You can also keep it O- in your office desk. लोग आएंगे Okay. आसपास से देखेंगे, बोले यार ये क्या है, बोलो यार यही है, क्या दिख रहा है आपको, उसको पूछो, जवाब नहीं देने का ये क्या है, उसको बोले क्या दिख रहा है। Yes, sir, I'll do that. तो Yes, sir. बोले वो पढ़ेगा नहीं, जो दिख रहा है ना वो पढ़ेगा नहीं, you'll notice, you'll observe this, that Mm. person will not read it out, मन ही मन में पढ़ेगा लेकिन बोल के नहीं पढ़ेगा, आई एम एन इडियट बोलेगा, नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके पास वही पुराना मीनिंग है ना, वो उसको बोलने नहीं देगा। Okay, वो I'll जब do that. पढ़ेगा फिर उसको थोड़ी देर बाद बोले इजंट इट अमेजिंग, है ना। Nice, sir. तो I'll do that. ऐसे ऐसे करना है, एंड इमेजिन दैट इफ यू आर डूइंग दिस, अप्लाइंग दिस इन योर वर्क प्लेस ऑफिस में, और हर कोई अगर ऐसे ही सोचना शुरू कर दे क्या होगा। कोई Hmm. अपने आप को ना गधा सोचेगा ना कुछ और सोचेगा, सोच ही नहीं पाएगा। Hmm. बोले यार तो मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, तू आगे बता, मैं तो डिसिप्लिन हूँ, मैं तो आउटस्टैंडिंग हूँ, मैं तो इंस्पायरिंग, एंड आई एम टेनेशियस, तू आगे बता। तो उसके बाद कुछ शब्द ही नहीं बचेगा फिर। एग्जैक्टली, एंड देन पुट इट द अदर वे, हाउ अबाउट थिंकिंग इन दिस वे। आप उसको बोले जस्ट थिंक अबाउट दिस, कैसा लग रहा है,
And how about thinking that this way? Every time you come across this. Similarly, failure. अब फेलियर का जो हमने डिफिनीशन निकाला, उस हिसाब से आप कभी अपने आप को फेलियर का जो मीनिंग अभी आपके पास है, आप उसको मान ही नहीं पाओगे। तो वो वाला सेशन जरूर देखना, सेशन 49। इट्स अ वेरी पावरफुल सेशन। व्हेन यू से आई एम अ फेलियर, आपकी पूरी थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगी। अब बोले ऐसा फेलियर होना तो भाग्य भाग्य में चाहिए। यू रियली नीड टू बी दैट लकी टू बिकम अ फेलियर लाइक दिस। लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट लकी, आई फेल्ड। लेकिन इस टाइप का फेलियर के लिए आपको लकी होना पड़ेगा। यू रियली नीड टू बी लकी टू बिकम अ फेलियर लाइक दैट। यू रियली नीड टू बी लकी टू बिकम एन इंट्रोवर्ट लाइक दैट, जो डेफिनेशन मैंने शेयर किया। सेम थिंग, यू रियली नीड टू बी एन इडियट लाइक दैट, तब जाके आप कर्व से घूमते रहोगे, बोलते रहोगे। लोगों को पूछ पूछ भी सकते हो, डू आई लुक लाइक एन इडियट? और डोंट यू थिंक आई एम एन इडियट? वो बेचारा सोच में पड़ जाएगा, क्या बात हो रही है। So this is the whole thing. And what happens, this is what transformation. You can bring transformation in a workplace, you can bring transformation. And imagine I'm doing this with children, school children. उनके लाइफ में कैसे थॉट्स आ रहे हैं। So that's it for tonight. Thanks for joining the session. I'll share the recording as soon as it's over. Thank Okay? you, sir, for this awesome session. I am an idiot. Now I'll not feel bad about it. Sir, if you want, I can give you all words and you create a meaning different out of it because I'm filled with all these words. But no, now it is fun, sir, learning like this way. Yes, actually it is. Mm. Actually, uh, like I can write a book on my book of abbreviations. So I have wonderful abbreviations for all these words. You think of any word which is not good, which doesn't carry good news, good vibration. So I create a Mm. new, and you'll enjoy that meaning. Stupid is one of them. Yes, sir. आप एक होमवर्क करो ना, स्टूपिड का लिखो, खुद लिखो, बनाओ। एस से क्या हो सकता है, टी से क्या हो सकता है, यू से क्या हो सकता है, एंड देन यू क्रिएट अ न्यू मीनिंग आउट ऑफ Mm. ठीक है, sir. इट। That is the right way. Yeah. एब्सोल्युटली। मैं तो आपके साथ वो So शेयर कर। what हाँ बोलो। what made you come up with this thought, sir, to take up these words and abbreviate it? बिकॉज आई एम एन कहाँ से इडियट। कहाँ से ये थॉट आया सर आपको? कैसे मतलब कुछ देखकर आपको ऐसा लगा कि आई डोंट नहीं नो, आई इट वाज रियली डोंट रिकॉल के ये सारे अजीब थॉट्स मेरे लाइफ में कैसे आया। बट यस, दिस काइंड ऑफ थॉट्स वर देयर इन माय सिंस माय चाइल्डहुड। मतलब कुछ चीज को लेके कुछ और मीनिंग निकालना, जैसे आई से दैट ये आम कुछ खास है ना। सो नाउ आम इज ऑर्डिनरी, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम मैंगो, आई एम सेइंग ये आम कुछ खास है, मतलब इट्स नॉट दैट ऑर्डिनरी, दिस ऑर्डिनरी इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। so So playing with words was something which I love to do since my childhood. कि हर शब्द का अलग तरीके से मीनिंग निकालना एंड देन क्रिएटिंग अ फन आउट ऑफ इट। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मतलब मेन वुमेन, इन शब्दों का भी मेरे पास अलग अलग एब्रिविएशंस sir, हैं। for your emotions won't get attached when you create like meaning out of it. हाँ, Emotions won't get triggered. नहीं, इमोशन ट्रिगर होना है तो इंस्टेड ऑफ ट्रिगरिंग द इमोशंस व्हिच आर ऑलरेडी देयर, व्हिच आर नॉट सो गुड, वीक इमोशंस की जगह आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट करो।
सर उस पे थोड़ा बताओ ना, मतलब फीलिंग कैसा होना। एक वर्ड समझ गई, बट एसोसिएटेड फीलिंग एंड इमोशन अपने उसके आप साथ ट्रिगर हो कैसे। जाएगा, अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। सी व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट, व्हेन आई एम सेइंग इडियट में सबसे पहला वर्ड लिटरली मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंट, तो आई एम ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्टिंग इडियट। इडियट तो इंटेलिजेंट नहीं होता ना। डू वी कंसिडर एन इडियट एज एन इंटेलिजेंट पर्सन? नो, हमने पहले उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि व्हाट काइंड ऑफ इडियट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई एम दिस काइंड ऑफ इडियट, आर यू रेफरिंग टू मी दिस काइंड ऑफ इडियट? तू बोलेगा नहीं, तो बोले फिर किस तरह की इडियट तुम रेफर करो, बोलो। अब जो भी वो बोलेगा आप उसको बोलो, सी यू आर सो इंटेलिजेंट, इजंट इट? आप दिमाग लगा रहे हो अपना एक्सप्लेन करने के लिए। सी यू आर सो डिसिप्लिन, आप उसी को बोल रहे हो। सी यू आर सो इंस्पायरिंग, आप ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हो कि कैसे आप अपना वाले इडियट को मेरे सामने रखोगे और मेरे वाले इडियट को आप चैलेंज करोगे। सो यू आर आउटस्टैंडिंग, आप उसी बंदे को बोल रहे हो। एंड यू आर टेनेशियस एज वेल, यू आर डिटरमिन्ड कि मुझे वो वाला मीनिंग आए जो आप देना चाहते हो। अब बोला अगर मैं आपको इडियट हूं, आपको कैसा लगेगा? यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, you are a disciplined person, you are an inspiring person, you are outstanding, you are tenacious. कैसा लगे if I say that Ankita you are an idiot? कैसा लगे? सर आई एम ऑन क्लाउड 9। हैप्पी फीलिंग। So So this sometimes it happens, no, for me at least, words I won't remember, but the feeling what they've given that stays. तो उस exactly लेवल पे कैसे चेंज, इससे चेंज हो सकता है क्या एट दैट लेवल। बिल्कुल होता है। See, every word is stored in our brain as a meaning only, as a feeling only. उसका फीलिंग चेंज उसका करना बहुत इमोशन होता है, उसका सर इमोशन होता डिफिकल्ट पे एक वर्ड है सर, डिफिकल्ट। है। डिफिकल्ट को आप रिप्लेस कर दो नॉट सो इजी, so that it then it becomes easy. उससे फीलिंग जाएगा ना सर, ये अगर इफ वी The moment एब्रिवेट you say not so easy, it becomes easy, right? इट बिकम्स लाइटर। Yeah. When you're not using the word difficult, it doesn't remain difficult at all. When you're saying it's not so easy, you're saying it is easy, but not that easy as you think or as I think. But what I did, I moved it from difficult zone to easy zone now, replacing bad with not so good, replacing sad with not so happy. So any negative word, जब आप उसका opposite not so से replace कर दोगे, it automatically changes the vibration, changes the emotions immediately, instantly. ना कोई आपके सामने बोला, I'm very sad today, बोले yes, I could see you're not so happy. What happened? What took away your happiness? Now, instead of saying why that person is sad, he'll start saying the same thing, that what took away his happiness or her happiness. अब happiness को कौन लेके चलेगा, वो explain कर रहा है ना? So now that person is explaining everything from being happy instead of being sad. So every word has its own feeling, own frequencies, own vibrations. You need to be very careful while using them. Many times क्या होता है, हम अपने आप को label कर देते हैं. So like you are saying that I'm depressed, for example. So आपने label कर दिया. So the what is important is that it is not that you are saying I'm depressed. The point is what happened that gave you this feeling. हुआ क्या जिसका फीलिंग आपको ऐसा लगा? So how you can replace it by asking, okay, what is that which you are not feeling happy about right now? आपने डिप्रेशन को रिप्लेस कर दिया, स्ट्रेस को आप रिप्लेस कर सकते हो, एंजाइटी को रिप्लेस कर सकते हो by simply using the word happy in a very powerful context. That what is that one thing which snatched away your happiness? What is that one thing because of which you are not feeling happy now? तो आपने हैप्पीनेस को रिस्टोर कर दिया उसी वक्त. अब नाउ दैट पर्सन इज थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर. Now he is or she is not thinking in terms of the words that he was earlier using.
I'm feeling depressed, I'm feeling sad or whatever. Now that person is saying the same thing, establish करने का कोशिश कर रहा है कि why that he or she is not happy right. तो happiness आ गया ना, happiness को वो explain कर रहा है, मैं क्यों happy नहीं हूँ, मैं क्यों happy नहीं हूँ. तो बार बार यही बोल रहे कि मैं happy ही हूँ लेकिन happiness feel नहीं कर रहा. करते करते happiness का feeling automatically आ जाए. It's very simple actually. The process is very simple. See, not staying happy is very difficult, but staying happy is the easiest thing. By simply asking yourself why I am not feeling happy right now, like what actually happened, which is not allowing me to feel happy right now. Ask yourself whenever you are not feeling happy or with whatever other feelings you are having at any given point of time. Just ask yourself that what is that because of which I am not feeling happy right So, and asking as an observer mindset, now. right? We should ask ourselves being an observer to our own emotions. Yes, yes, absolutely. And Yes. this word, That because using of this. which I am not feeling happy right now. What is that because of which you are not feeling happy right now? So now using the word idiot also, though we replace it with positive word, but that feeling also should come. So imagining that feeling, that is the root, no, sir. That is Exactly. So that is why you need to practice it for some time till that becomes your new meaning. तो मतलब वो थोड़ा ये ट्रिकिंग द माइंड नहीं होगा सर. वो कैसे प्रैक्टिस कर कोई सकते हैं? नहीं, उसको बोलो कि इसका मतलब यही है, तुम मानो ना मानो. इमेजिनेशन में कैसे मतलब इंटर चेंज कर सकते हैं सर? इमेजिनेशन में ही तो चेंज हो रहा है. आप द मोमेंट यू आर लिसनिंग टू द वर्ड इडियट, फर्स्ट आई का मतलब ही है इंटेलिजेंट. हम्म. तो इमेजिन क्या करना है सर? इमेजिन वही कि मैं इंटेलिजेंट. ओके. ठीक है सर. गॉट इट. बोलो इमेजिन करूँ ना करूँ यही यही सच है. आप क्या करोगे वो. हम्म. तो सच तो यही है कि आई का मतलब इंटेलिजेंट ही है, डी का मतलब डिसिप्लिन ही है, दूसरा आई का मतलब इंस्पायरिंग ही है, ओ का मतलब आउटस्टैंडिंग है, टी का मतलब टेनिशियस है. अब तुम जो मर्जी सोचना सोच, है तो यही. यही हकीकत है, यही सच. कॉलिंग अ स्पेड, स्पेड का कुछ भी नाम दे दो वो तो स्पेड जैसे ही दिखेगा. ये भी वैसे ही है. आप बोले इसका मतलब यही है, मेरे लिए तो यही है. आप तुम्हें जो मर्जी सोचना है सोचो. एंड दैट्स व्हाई दैट पिक्चर इज इंपॉर्टेंट जो मैंने को पायलट से बनवाया. यू कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, कीप इट मेनी प्लेसेस, जहां जहां पे इजीली विजिबल प्लेसेस है वहां पे रखो. जो दूसरा बंदा देखेगा ना वो भी मानना मानना शुरू कर देगा वैसे ही, ऐसा ही है. ठीक है सर. आई पुट इट इन माय विजन बोर्ड. उसको Yes. हम्म. Whoever asks you what is this, you can tell them this is not for you, this is for me. तो मुझे इमेजिन करके हंसी आ रहा है तो व्हेन इट बिकम्स दैट इट विल बी सच अ गुड वाइब्स. Absolutely. Okay, sir. Absolutely. Thank you, sir, for explaining so well. Because I felt like when I'm reading the document and when I'm conversing and getting clarity, that feeling is different, and simply reading the document, that is different Quite likely, quite likely. understanding. Because Uh, you are facing this for the first time. You're for the first time you're looking at it from a different perspective. yes, sir. वो तो Yeah. रेजिस्टेंस आएगा ही. माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का अगर रेजिस्टेंस आ सकता है तो हम तो इंसान है, हमें तो आएगा ही आएगा. वो तो फिर भी आर्टिफिशियल है. उसी को रेजिस्टेंस आ रहा है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं. तो उसको मनाना पड़ा ना. तो अभी मैं भी बोलती हूँ उसकी तरह थैंक यू. आई एम एन इडियट. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. ऐसे थैंक गॉड दैट आई एम एन इडियट.
I can't hear you. So it's like you look around everybody and say, oh my God, यार इनको पता तक नहीं है. पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाए. Their life will be transformed. And that's why I say, see, it must show up in your outside. Outside is something when you are working on your inside, it is showing up. It has to show up. लोगों को दिखेगा. वो अपने आप दिखेगा. वो जरूरी है. अगर उनको नहीं दिख रहा, that means I am not practicing enough. Done? Okay, sir. Thank you so All much, right. sir. Good night. Bye, God sir. bless you. Thank you, Let sir. us take a picture. मैंने picture लिया था, एक और ले लेते हैं. So here we go. 1, 2. अरे आंखें बंद हो गई तुम्हारी. चलो 1 second. 1, 2. Beautiful. Fantastic. Good. Thank you, sir, for a wonderful session. My Bye, sir. pleasure, my dear. God bless you. Peace.